So hello to all my dear students. Okay, I welcome you all to Sail to MDS Dental Academy. I am Dr. Manoj Trivedi, pediatric dentist and professor in College of Dental Sciences. So now aspirants, as everybody know that Maharashtra Public Service Commission exam latest update has come. You know, students are waiting since long, exam kab hoga, you know, numerous calls have been done to the Maharashtra Public Service Commission and no information was there. But suddenly today they uploaded on the website the exam date, and you know, it is like something, a bombardment they have done, that the exam they have conducted on 19 January 2023 only. This is in Marathi. I have converted and make it in the English so everybody can understand. So it's a screening exam, as we have told in our previous video, that you have a screening exam, then from that you have the interview will be there. So it is decided that exam is going to be on January 19, 2023. Few of students are asking me, sir, we can give? No. This advertisement was published on February 18, 2022. So it is completely advertisement of long back, a 10 to 12 month old advertisement. So they have decided that the exam will be on January 19, 2023. Exam center they have kept 6: Aurangabad, Nanded, Pune, Amravati, Nagpur and Mumbai. Timing they have given around some 4 to 6:30 they have given. Normally the details of examination scheme, syllabus, selection process, everything they have mentioned in the previous video, and we have also told that what it is going to be. It is mostly the chances are that it is going to be the dental paper only, but we have to wait what they are announcing in 2 to 3 days. Are they planning to introduce some more GK, but probable chances are there that it will be the pure dental paper only. Fine. And whatever the admit card will there, and many questions are there from my dear students as when the admit card will they announce. Everything will be in process in the coming weeks. You have to keep a tab on the MPSC website. The link of this notice and the official website I'm going to mention in the description box. Don't go, just don't write in Google. Many blogs are there and you may find somewhere wrong information. So go to the official website, or any doubt is there, just ask me. So this is the date, January 19, 2023. So this video is not just for the announcement. I'm going also to tell how to plan now, my dear aspirants. Okay, before that, for the students who have not joined, remember this 21 days only. We have the lectures, we have the app for the new students where all the subject lectures are available. You can go through. We have more than 50 practice papers which focus on government preparation, and many MCQ discussion. Everything is there. So anybody want to join, they can just DM me on this number, or they can visit the website. So every details and of the regarding our lectures and everything are there on the screen. But now the main thing I'm going to talk is how to plan. All are confused. So we are going to deal the same thing now. So now, dear students, I had told in the beginning of the video that I'm going to tell about how to plan the preparation. Now suddenly we have just 22 days. जो students मेरे contact में रहते थे, जो we used to talk with them, I used to tell them that at least give 2 to 3 hours every day so you can proceed with the preparation. But no problem, those students who have thing just started or halfway, just be cool. Now 20 days, not only you, everybody have 20 days for the preparation. But now the main thing is that in this 20 days, how much time you can give and how much you can keep yourself cool. Jitna tum cool or calm rahoge, that much the chances are there, things will be more written and you can able to go through it. See, we are going to follow very simple strategy here. 22 days are there precisely. In that 10 to 12 days, you can go for the preparation, and little 8 days, just revise whatever you have prepared. Now, many students have messaged me from evening, or 20-25 messages have come regarding past papers. Now, remember, aspirant, MPSC के कोई past papers नहीं है. The exam was not conducted in the recent 5 to 7 years. And हमारे दिमाग में एक गलत notion है कि we have to study the past papers and from past papers only question will come. It is not like that. Nowadays, every exam pattern has been changed, whether it is a NEET, INICT or government exam. If you have paper of 2 to 3 years, then it's good to read the past papers. But on our website, other state PSC recent papers are there. So please go through them once. Subject wise papers are there. Go through them once. Important NEET and INICT papers are there. From there also question can come. Go through them once. Now हम कैसे preparation करेंगे?
Okay, we have just 22 days. In that I told 12 days you have to go for the big main preparation, and remaining 8 days you have to practice what you have done on the 12 days. So in this 12 days I am saying focus purely on clinical subject. जो तुम्हारे 9 clinical subject है उस पे pure focus रखो. Every day try to study minimum of 12 to 14 hours. And what you are going to study? Start reading synopsis and go through our academy lectures. In that 12 hours, remember 2 to 3 hours go through our academy lectures. Almost everything will be covered in that. Remaining 2 hours try to go through synopsis. So in that way 5 hours you have to go with your base preparation. क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नए बनाते हैं वो लोग, तो जितना तुम्हारे पास थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होगा वो तुम्हारे लिए एडवांटेजियस होगा. बाकी जो दिन के 3-4 घंटे रहते हैं उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे? जस्ट रीड क्वेश्चन एंड आंसर. अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूर नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ पाओगे. फाइन, जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर एंड मोस्टली गो थ्रू द मिसलेनियस पार्ट ऑफ योर डेंटल पल्स. उसको एक बार फर्स्ट रैप अप कर लो. और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. बहुत सारे लोगों ने 2-3 साल पहले एग्जाम दी होगी या कुछ लोगों ने 5-6 ईयर्स पहले दी होगी. तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. हमारे वेबसाइट पे मोर देन 50 पेपर्स दिए गए हैं. एवरी डे ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 to 2 पेपर्स. इफ यू आर हैव फियर ऑफ अटेंडिंग जस्ट स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, जितना हो सके उतने क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ो. नेगेटिव तुमको नहीं आता उसको निकालने का, मतलब नेगेटिव मार्किंग्स भी एग्जाम में होते हैं, तो उसको भी तुमको हैबिट होनी चाहिए कि यस ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं उसको छोड़ पाऊँ. सारे तुमको अटेम्प्ट नहीं करनी बिकॉज नेगेटिव मार्किंग्स आर डेफिनेटली देयर. सो ये भी प्रैक्टिस करनी है. तो रिमेंबर दिन के 10 घंटे में से 2 घंटा तुमको पल्स के सिनॉप्सिस पढ़ने हैं, 2 से 3 घंटा हमारे एकेडमी लेक्चर्स देखने हैं, और बाकी के 4 घंटा तुमको एमसीक्यू पढ़ने हैं और 1 घंटा तुमको हमारे एकेडमी के पेपर रिवीजन करने, जो तुम्हें एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस देगी कि तुम वहाँ पे 2 घंटा बैठकर एग्जाम दे पाओ. ये तुम्हारा काम होना चाहिए पहले 12 दिन. ओके, और सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट पे फोकस करना है. फाइनल ईयर के 8 सब्जेक्ट और ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन, पेरियो, प्रोस्थो, कम्युनिटी ऑल्सो रेड, उसमें से क्वेश्चन आते हैं. पीडो, लाइक दैट यू हैव टू सी ऑल योर 9 सब्जेक्ट्स. एंड देन आफ्टर 12 डेज ओवर, जो तुम्हारे बाकी के दिन बचेगी 8 डेज, तो तुमको वो सब रिवीजन करना है. ओके, जो तुमने पहले 12 दिन पढ़ा है. डोंट गो इनटू अननोन, डोंट गो इनटू न्यू. रिमेंबर वहाँ पे तुमको रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए. तुमने जो पढ़ा हो तुम वहाँ पे रिप्रोड्यूस करवाओ. कब रिप्रोड्यूस होगा वो? जब तुम लोगों ने रिवीजन किया होगा तभी. बाकी तुमने आज पढ़ा है, 10 to forget after 10 to 15 days. So 12 days, remember every day try to see at least one subject and don't think that मुझे सब्जेक्ट पूरा करना है. हमारे एकेडमिक लेक्चर्स पूरा कर दो तो बहुत सारा कवर हो जाएगा तुम्हारा. फाइन. सो हर एक दिन को एक ही सब्जेक्ट दो. अभी यहाँ ओरल पैथ है, उसको 2 सब्जेक्ट दो. उसके सिनॉप्सिस मत पढ़ो क्योंकि टाइम नहीं है, पर बाकी सारे सब्जेक्ट के सिनॉप्सिस बहुत छोटे छोटे, तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो. ओके, फाइन. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस 12 days व्हाट यू हैव टू प्लान. यू हैव टू गो थ्रू एकेडमिक लेक्चर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट one day. फाइन. फिर सिनॉप्सिस में पूरा नहीं पढ़ पाओ तो एटलीस्ट सिनॉप्सिस में जो मिसलेनियस पार्ट होते हैं, टेबल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो गवर्नमेंट एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, वो तुम एक बार देख लो. फाइन डियर स्टूडेंट्स. एंड देन नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सी दी एमसीक्यूज. फर्स्ट मिसलेनियस एमसीक्यू सारे खत्म कर लो. ओके, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, प्रैक्टिस द पेपर्स. ये मंत्र तुम्हें फॉलो करना है. और बाकी के जो 8 दिन, जो तुमने 12 दिन पढ़ा है, वो तुमको रिवाइज करना है. फाइन एस्पिरेंट, रिमेंबर सब कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं. जैसे मैंने बोला कि टेबल्स है, मिसलेनियस पार्ट है, वो सब पढ़ना है. और डिवाइड इट कि भाई कंजर्वेटिव के लिए 1 दिन देना है तो 1 दिन में जितना कंजर्वेटिव खत्म हो दैट इज मोर देन इनफ. सेकंड, एंडो 1 दिन जितना हो उतना, पेरियो 1 दिन जितना हो उतना. सारे सब्जेक्ट को गो थ्रू एक बार कर लेना है क्योंकि सब में से क्वेश्चंस तुमको आने ही वाले हैं. फाइन. ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग इन 12 days. बेसिक्स में क्या देखना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एनाटॉमी के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. जस्ट ट्राई टू सी द ट्राइजेमिनल नर्व, ऑल दैट ब्रांचेस, facial artery, all the little bit about the artery and vein you should know. Brachial arches, brachial pouches,
ये 4-5 चीज़ तुमको एनाटॉमी में पता होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सिंपल चीज़ें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैट, अबाउट प्रोटीन, ओके, विटामिन के इंपॉर्टेंट अलग अलग नेम, दिस मच इज मोर देन इनफ। ओके, माइक्रोबायोलॉजी हैव अ detailed idea about the sterilization, just 1 page in synopsis given, go through the sterilization, okay, gram positive gram negative बैक्टीरिया खत्म पता होने चाहिए तुम्हें। so this much is more than enough if at all you go through it। फिजियो के लिए just try to see the blood। फार्मेक में एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स अच्छी तरह देख लेना। हमारे एकेडमिक लेक्चर्स में बहुत सिंपल में मैंने निमोनिक्स दिए, ऑलमोस्ट तुम्हारा सब एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स हो जाएगा। So this much you have to go through, dear aspirants. Any doubt, just let me know. Remember one thing, everybody had 20 days. Okay, there are very few students who are preparing from the times, because the break has come. The exam was announced in March and the break has come in the October, November. Then everybody has stopped studying. 90% of students. Okay, so just the mantra is there. Try to be cool. Every day try to touch one subjects and revise whatever you have done. Definitely the things will be on the track. And any other doubt, just let me know. I am always there for you. Till then, aspirants, take care, goodbye, and work hard. At least now 10 hours in a day you have to give. If you are really passionate to go into government exam, 10 hours to dene hi padegi. Whatever if you are doing job or clinics, try to give the time. Okay, aspirant, till then, take care.